Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. In previous lecture, we had studied the introduction to novel GIT drug delivery system, and in conclusion of which we have discussed the novel approaches for GIT drug delivery. Today we will be continuing the previous topic where we left. The topic that we are going to study now is gastroretentive drug delivery system. This topic is again subdivided into two parts, that is floating drug delivery system and mucoadhesive drug delivery system. Before starting its approaches, let's discuss why to opt gastric retention for delivery of drugs. Oral administration is the most convenient and preferred means of any drug delivery to the systemic circulation. Oral controlled release drug delivery have recently been of increasing interest in pharmaceutical field to achieve improved therapeutic advantages such as ease of dosing administration, patient compliance, and flexibility in formulation. Drugs that are easily absorbed from gastrointestinal tract and have short half-lives are eliminated quickly from the systemic circulation. Frequent dosing of these drugs is required to achieve suitable therapeutic activity. To avoid this limitation, the development of oral sustained controlled release formulations is an attempt to release the drug slowly into the gastrointestinal tract and maintain an effective drug concentration in the systemic circulation for a long period of time. After oral administration, such a drug delivery would be retained in the stomach and release the drug in a controlled manner so that the drug could be supplied continuously to its absorption sites in the gastrointestinal tract. These drug delivery systems suffer from mainly two adversities: the short gastric retention time and unpredictable short gastric emptying time, which can result in incomplete drug release from the dosage form in the absorption zone, stomach or upper part of the small intestine, leading to diminished efficacy of administered dose. ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंट और प्रेफर्ड मीन्स है ड्रग डिलीवरी के लिए सिस्टमिक सर्कुलेशन में. ओरल कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रखते हैं फार्मास्यूटिकल फील्ड में, क्योंकि थेरेप्यूटिक एडवांटेजेस या इम्प्रूव थेरेप्यूटिक एडवांटेजेस अचीव किए जा सकते हैं, जैसे कि डोजिंग एडमिनिस्ट्रेशन में ईज़ या पेशेंट कंप्लाइंस या फिर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर्मुलेशंस के अंदर. ड्रग्स ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में और शॉर्ट हाफ लाइफ्स रखती हैं ऐसी ड्रग्स जो ईजिली एब्जॉर्ब होती हैं और एलिमिनेट हो जाती हैं क्विकली फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन. ऐसी ड्रग्स जो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएं और शॉर्ट हाफ लाइफ रखें और क्विकली एलिमिनेट हो जाएं सिस्टमिक सर्कुलेशन में, उनके लिए फ्रीक्वेंट डोजिंग रिक्वायर्ड होती है ताकि सूटेबल थेरेप्यूटिक एक्टिविटी मेंटेन रहे. इस लिमिटेशन को अवॉइड करने के लिए ओरल सस्टेन कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस बनाई जाती हैं, जिनका मकसद ये होता है कि ड्रग स्लोली रिलीज़ हो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में और इफेक्टिव ड्रग कंसंट्रेशन मेंटेन रखे सिस्टमिक सर्कुलेशन में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए. ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ऐसी ड्रग्स रिटेन रहती हैं स्टमक में और ड्रग को रिलीज़ करती हैं कंट्रोल मैनर में, ताकि ड्रग कंटिन्यूसली सप्लाई हो एब्जॉर्प्शन साइट्स पे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर. इन ड्रग डिलीवरी सिस्टम के दो डिसएडवांटेजेस हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम और अनप्रेडिक्टेबल शॉर्ट गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम, जो कि इनकम्प्लीट ड्रग रिलीज में रिजल्ट कर सकता है डोजेज फॉर्म से एब्जॉर्प्शन साइट पर, जिसकी वजह से डिमिनिश्ड एफिकेसी हो सकती है एडमिनिस्टर्ड डोज की. To formulate a site-specific orally administered controlled release dosage form, it is desirable to achieve a prolonged gastric residence time by the drug delivery. Prolonged gastric retention improves bioavailability, increases the duration of drug release, reduces drug waste, and improves the drug solubility that are less soluble in a high pH environment. Also, prolonged gastric retention time in the stomach could be advantageous for local action in the upper part of the small intestine, for example, treatment of peptic ulcer,
or etc. साइट स्पेसिफिक ओरली एडमिनिस्टर्ड कंट्रोल्ड रिलीज डोजेज फॉर्म की फॉर्मुलेशन के लिए ये डिज़ायरेबल होता है कि प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम अचीव किया जाए ड्रग डिलीवरी में. प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम बायोअवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ड्रग रिलीज़ की ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करता है और इसके अलावा भी ड्रग वेस्ट को रिड्यूस करता है. इन टर्न ड्रग की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है और लेस सॉल्यूबल ऐसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है जो कि लेस सॉल्यूबल होती हैं हाई पीएच एनवायरनमेंट में. प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम स्टमक के अंदर एडवांटेजेस उस सूरत में भी होता है जब लोकल एक्शन रिक्वायर्ड होता है ड्रग्स का अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, लाइक पेप्टिक अल्सर्स की ट्रीटमेंट में. सो व्हाट आर gastroretentive drug formulations? Gastroretentive drug delivery is an approach to prolong gastric residence time, thereby targeting site-specific drug release in the upper gastrointestinal tract for local or systemic effects. Gastroretentive dosage forms can remain in the gastric region for long periods and hence significantly prolong the gastric retention time of the drugs. So what is the definition of gastroretentive drug formulations? Gastroretentive drug delivery is an approach to prolong the gastric residence times, thereby targeting site-specific drug release in the upper gastrointestinal tract for local or systemic effects. Gastroretentive dosage form gastric region के अंदर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए रिटेन रहती हैं और इसी वजह से सिग्निफिकेंटली प्रोलॉन्ग करती हैं गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम, ड्रग की गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम को. Let's discuss the gastroretentive drug delivery approaches. Over the last few decades, several gastroretentive drug delivery approaches have been designed and developed, which includes high density sinking systems that is retained in the bottom of the stomach, low density floating systems that causes buoyancy in gastric fluid, and mucoadhesive systems that causes bioadhesion in stomach mucosa, unfoldable, extendable or swellable systems which limits emptying of the dosage forms through the pyloric sphincter of the stomach, superporous hydrogels and magnetic systems. गैस्ट्रोरेटेंटिव डिलीवरी अप्रोचेस को हम 6 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं. हाई डेंसिटी सिस्टम या सिंकिंग सिस्टम जिसमें ड्रग या डिलीवरी फॉर्मुलेशन रिटेन रहती है बॉटम ऑफ द स्टमक में, या फिर लो डेंसिटी जिसे हम फ्लोटिंग सिस्टम भी कहते हैं जो बायंसी कॉज करता है गैस्ट्रिक फ्लूइड में, ड्रग बायंट रहती है या ड्रग फॉर्मुलेशन बायंट रहती है गैस्ट्रिक फ्लूइड के ऊपर. तीसरा सिस्टम म्यूकोएडहेसिव सिस्टम है जिसमें ड्रग फॉर्मुलेशन बायो एडहेशन के थ्रू स्टमक म्यूकोसा के साथ एडहेयर होती है. चौथे सिस्टम में हम अनफोल्डेबल, एक्सटेंडेबल और स्वेलेबल अप्रोचेस को यूज़ करते हैं जो लिमिट करते हैं एम्प्टीइंग डोजेज फॉर्म की थ्रू पाइलोरिक स्प्रिंटर. Fifth system is superporous hydrogels and sixth is magnetic system. So let's now discuss the factors controlling gastric retention of the dosage forms. The stomach anatomy and physiology contain parameters to be considered in the development of gastroretentive dosage forms. To pass through the pyloric valve into the small intestine, the particle size should be in the range of 1 to 2 millimeter. The most important parameters controlling the gastric retention time of the oral dosage forms include density, size and shape of the dosage form, food intake and its nature, caloric content and frequency of intake, posture, gender, age, sex, sleep, body mass index, physical activity, and disease state of the individual. For example, chronic disease states like diabetes, and administration of drugs with the impact on gastrointestinal transit time
For example, drugs acting as anticholinergic agents like atropine or propanthelene, or opiates, for example, codeine and prokinetic agents like metoclopramide or cisapride. The molecular weight and lipophilicity of the drug, depending on its ionization state, are also important parameters. कुछ फैक्टर्स हैं जो स्टमक एनाटमी और फिजियोलॉजी में कंसिडर किए जाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रोरेटेंटिव डोजेज फॉर्म्स. पाइलोरिक वॉल्व से क्रॉस करने के लिए, स्टमक की पाइलोरिक वॉल्व से क्रॉस करने के लिए डोजेज फॉर्म को स्मॉल इंटेस्टीन में पार्टिकल साइज 1 to 2 मिलीमीटर की रेंज में होना चाहिए. जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम को कंट्रोल करने के लिए ओरल डोजेज यूनिट्स में से, उनमें डेंसिटी, साइज और शेप ऑफ डोजेज फॉर्म, फूड इनटेक और उसकी नेचर, कैलोरिक कंटेंट और फ्रीक्वेंसी इनटेक एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक, posture, gender, age, sleep, body mass index, physical activity and the disease state of the individual, like अगर कोई सफ़र कर रहा है chronic diseases है, डायबिटीज़ जैसे कि डायबिटीज़, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स विद इम्पैक्ट ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रांजिट टाइम, फॉर एग्जांपल ड्रग्स विच आर एक्टिंग एज एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स या ओपिएट्स हो गए या प्रोकाइनेटिक एजेंट्स हो गए. ये तमाम फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम को ओरल डोजेज फॉर्म्स की. मॉलिक्यूलर वेट और लिपोफिलिसिटी ड्रग की depending on its ionization state are other important parameters that are needed to be considered in order to formulate a gastroretentive drug delivery system. So let's discuss all these factors in detail. Density of dosage form. The density of a dosage form also affects the gastric emptying rate and determines the location of the system in the stomach. Dosage form having a density lower than the gastric contents can float to the surface, while high density systems sink to the bottom of the stomach. Both positions may isolate the dosage systems from the pylorus. A density of less than 1 gram per centimeter cube is required to exhibit floating property. डेंसिटी डोजेज फॉर्म की इफ़ेक्ट करती है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट पे, और ये डिटरमाइन करती है कि डोजेज फॉर्म की लोकेशन स्टमक में किस जगह पर होगी. डोजेज फॉर्म जिनकी डेंसिटी लोअर होती है स्टमक कंटेंट से, वो फ्लोट करते हैं स्टमक कंटेंट्स पर, जबकि डोजेज फॉर्म जिनकी डेंसिटी हायर होती है स्टमक कंटेंट से, वो सिंक कर जाते हैं टू दी बॉटम ऑफ द स्टमक. दोनों पोजीशंस आइसोलेट करती हैं डोजेज सिस्टम को फ्रॉम दी पाइलोरस. डेंसिटी लेस देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्ड होती है टू एग्जिबिट फ्लोटिंग प्रॉपर्टी. Next factor that affects the gastric retention time is the volume. The resting volume of the stomach is 25 to 50 milliliter. Volume of liquids administered affect the gastric emptying time. When volume is large, the emptying is faster. Fluids taken at body temperature leave the stomach faster than colder or warmer fluids. स्टमक का रेस्टिंग वॉल्यूम 25 to 50 ml तक होता है. लिक्विड्स जो एडमिनिस्टर किए जाते हैं उनका वॉल्यूम इफ़ेक्ट करता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को. जब वॉल्यूम लार्जर होता है एडमिनिस्टर्ड लिक्विड्स का, तो एम्प्टिंग रेट फास्टर हो जाता है. ऐसे फ्लूइड्स जो बॉडी टेम्परेचर पर लिए जाते हैं वो स्टमक को फास्टली लीव करते हैं, जबकि कोल्डर या फिर वार्मर फ्लूइड्स जो बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर के होते हैं या बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर के होते हैं, वो स्टमक को लीव करते हैं एट अ स्लोअर रेट. Size and shape also affects the gastric retention. Shape and size of the dosage forms are important in designing indigestible single unit solid dosage forms. The mean gastric residence time of non-floating dosage forms are highly variable and greatly dependent on their size, which may be large, medium, and small units.
In most cases, the larger the dosage form, the greater will be the gastric retention time. Due to the large size of the dosage form, that would not allow this dosage form to quickly pass through the pyloric antrum into the intestine. Dosage forms having a diameter of more than 7.5 millimeters show a better gastric residence time compared with one having 9.9 millimeter. Ring shaped or tetrahedron shaped dosage devices have a better gastric residence time as compared with other squares. The effect of size on floating and non-floating dosage forms on emptying have concluded that the floating units remain buoyant on gastric fluids. These are less likely to be expelled from the stomach compared with the non-floating units, which lie in the antrum region and are propelled by the peristaltic valves. साइज और शेप डोजेज फॉर्म का इम्पॉर्टेंट है इनडाइजेस्टेबल सिंगल यूनिट डोजेज फॉर्म्स को डिज़ाइन करने के लिए. मीन गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम नॉन फ्लोटिंग डोजेज फॉर्म्स के हाईली वेरिएबल होते हैं और ये ग्रेटली डिपेंड करते हैं साइज़ ऑफ डोजेज फॉर्म पे, जो कि लार्ज, मीडियम या स्मॉल यूनिट्स हो सकती हैं. मोस्ट केसेस में लार्जर डोजेज फॉर्म्स ग्रेटर रिटेंशन टाइम रखती हैं, क्योंकि लार्ज साइज़ होने की वजह से डोजेज फॉर्म पाइलोरिक स्फिंक्टर से, पाइलोरिक एंट्रम से इंटेस्टीन में पास नहीं हो सकती. डोजेज फॉर्म जिनका डायमीटर 7.5 मिलीमीटर या से ज़्यादा होता है वो बेटर गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम शो करती हैं कंपेयर विद डोजेज फॉर्म हैविंग a 9.9 मिलीमीटर डायमीटर. रिंग शेप्ड और टेट्राहाइड्रॉन शेप्ड डिवाइसेस बेटर गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम शो करती हैं एज़ कम्पेयर टू दीज अदर शेप्स. The effect of size of floating and non-floating dosage form on gastric emptying included that the floating units remain buoyant on the gastric fluids, जबकि non-floating units buoyant नहीं रहते. लेस लाइकली होता है कि वो एक्सपेल्ड हो स्टमक से कंपेयर्ड विद देयर नॉन फ्लोटिंग यूनिट्स जो कि लाई करते हैं एंट्रम रीजन में और जल्दी प्रोपेल हो जाते हैं बाय पेरिस्टैटिक वेव्स. Food intake and its nature. Food intake, viscosity and volume of fluid or food caloric value and frequency of feeding have a profound effect on the gastric retention of dosage forms. The presence or absence of food in the gastrointestinal tract influences the gastric retention time of the dosage form. Usually the presence of food in the gastrointestinal tract improves the gastric retention time of the dosage form, and thus the drug absorption increases by allowing it to stay at the absorption site for a longer period of time. Again, increase in acidity and caloric value slows down the gastric emptying time, which can improve the gastric retention of dosage forms. Nutritive density of meals helps determine gastric emptying time. It does not make any difference whether the meal has high protein, fat or carbohydrate content as long as the caloric content is the same. There is a difference between gastric emptying time of liquid digestible solid and indigestible solid. The emptying of large 91 millimeter indigestible objects from the stomach is dependent upon interdigestive migrating myoelectric complex. When liquid and digestible solids are present in the stomach, it contracts approximately 3 to 4 times per minute, leading to the movement of the contents through partially opened pylorus. Indigestible solids larger than the pyloric opening are propelled back, and several phases of myoelectric activity takes place when the pyloric opening increases in size during the housekeeping waves and allows the sweeping of the indigestible solids. The gastric residence time can be significantly increased under the fed conditions since the MMC is delayed.
फूड इनटेक, फूड की विस्कोसिटी और वॉल्यूम, और इसके अलावा उसकी कैलोरिक वैल्यू और फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग, इन सब का एक प्रोफाउंड इफेक्ट है गैस्ट्रिक रिटेंशन के ऊपर डोजेज फॉर्म की। प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ फूड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लुएंस करती है गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम को डोजेज फॉर्म के। यूजुअली प्रेजेंस ऑफ फूड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम को इम्प्रूव करती है और ड्रग एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होती है, जो ये अलाउ करती है कि ड्रग या डोजेज फॉर्म स्टे करे एब्जॉर्प्शन साइट पर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एसिडिटी में इंक्रीज़ या फिर कैलोरिक वैल्यू में इंक्रीज़ स्लो डाउन करता है गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम को, जो कि फर्दर इम्प्रूव करती है गैस्ट्रिक रिटेंशन ऑफ डोजेज फॉर्म को। न्यूट्रिटिव डेंसिटी मील्स की हेल्पफुल होती है गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम को डिटरमाइन करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मील किस कंटेंट का है, हाई प्रोटीन है, फैट है या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, एज लॉन्ग एज द कैलोरिक कंटेंट इज़ द सेम। इसी वजह से डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम ऑफ लिक्विड या फिर डाइजेस्टिबल सॉलिड्स या इनडाइजेस्टिबल सॉलिड में डिफ़र करता है। गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम तीनों सूरतों में डिफ़र करेगा। एम्प्टीइंग लार्ज इनडाइजेस्टिबल ऑब्जेक्ट्स में जिनका डायमीटर 91 मिलीमीटर तक होता है, स्टमक से एम्प्टीइंग के लिए ऐसे इनडाइजेस्टिबल ऑब्जेक्ट्स को डिपेंड करना होता है अपॉन इंटरडाइजेस्टिव माइग्रेटिंग मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स IMMC। जब लिक्विड या फिर डाइजेस्टिबल सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, तो स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करता है 3 to 4 टाइम्स पर मिनट, जिसकी वजह से मूवमेंट्स इंक्रीज़ होती हैं और इन मूवमेंट्स की वजह से कंटेंट पार्शली मूव करता है टू दी ओपन पाइलोरस। इनडाइजेस्टिबल सॉलिड्स जो कि लार्जर इन साइज़ होते हैं देन पाइलोरिक ओपनिंग, वो प्रोपेल बैक हो जाते हैं टू दी स्टमक और वेरियस या सेवरल फेजेस ऑफ मायोइलेक्ट्रिक एक्टिविटी अकर होती है जब पाइलोरिक ओपनिंग का साइज़ इंक्रीज़ होता है ड्यूरिंग दी हाउसकीपिंग वेज, और ये अलाउ करता है स्वीपिंग ऑफ इनडाइजेस्टिबल सॉलिड्स फ्रॉम द स्टमक टू द इंटेस्टाइन। गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम significantly improve हो सकता है under the fed conditions since the MMC is delayed. The effect of gender, posture and age. Generally, females have slower gastric emptying rates than male. The effect of posture does not have any significant difference in the mean gastric retention time for individuals in upright, ambulatory and supine state. In case of elderly person, gastric emptying is slowed down. Generally, females में gastric emptying rates slower होते हैं as compared to males. Posture का effect या कोई significant effect नहीं है on to the difference in mean gastric retention time अगर individuals upright position में है, ambulatory या supine state के अंदर है। elderly patients में या elderly persons के अंदर gastric emptying slow down हो जाती है। So these were all the factors affecting the gastric retention of the drugs. Now let's discuss the potential drug candidates for gastroretentive drug delivery system. Drugs, those are locally active in the stomach, for example, misoprostol, antacids are the potential drug candidates for gastroretentive drug delivery system. Drugs that have narrow absorption window into the gastrointestinal tract, for example, L-Dopa or levodopa, para-aminobenzoic acid, furosemide, riboflavin, etc. have the capability that they can be converted into gastroretentive drug delivery systems. Drugs those are unstable in the intestinal or colonic environment, for example, captopril, ranitidine, HCl and metronidazole can also be converted into gastroretentive drug delivery systems. Drugs that disturb the normal colonic microbes, for example, antibiotics against
Helicobacter pylori. They are the potential drug candidates for gastroretentive drug delivery system. And number 5th are the drugs that exhibit low solubility at high pH values, for example diazepam, chlordiazepoxide and verapamil can also be converted into gastroretentive drug delivery systems. सो 5 टाइप की ड्रग्स हैं जिन्हें हम गैस्ट्रोरेटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसी ड्रग्स जो लोकली एक्टिव होती हैं स्टमक में, ऐसी ड्रग्स जिनकी नैरो एब्जॉर्प्शन विंडो होती है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर, उन्हें गैस्ट्रोरेटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है. ऐसी ड्रग्स जो अनस्टेबल होती हैं इंटेस्टिनल या फिर कोलोनिक एनवायरनमेंट में, उन्हें गैस्ट्रोरेटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर फॉर्मुलेट किया जा सकता है. वो ड्रग्स जो नॉर्मल कोलोनिक माइक्रोब्स को डिस्टर्ब करती हैं उनको गैस्ट्रोरेटेंटिव ड्रग डिलीवरी फॉर्मुलेशंस में कन्वर्ट किया जा सकता है. या वो ड्रग्स जो लो सॉल्युबिलिटी रखती हैं हाई पीएच वैल्यूज़ के ऊपर, उनकी सॉल्युबिलिटी को इन्हांस करने के लिए गैस्ट्रोरेटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है. There are some drugs those are unsuitable for gastroretentive drug delivery systems, and these include drugs that have very limited acid solubility, for example phenytoin, drugs that suffer instability in the gastric environment, for example erythromycin, and drugs intended for selective release in the colon, for example 5-aminosalicylic acid and corticosteroids. कुछ ड्रग्स हैं जिन्हें हम गैस्ट्रोरेटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कन्वर्ट नहीं कर सकते या वो अनसूटेबल होती हैं फॉर कन्वर्जन इनटू गैस्ट्रोरेटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम. एंड दीज इंक्लूड ऐसी ड्रग्स जो लिमिटेड एसिड सॉल्युबिलिटी रखती हैं, वो गैस्ट्रोरेटेंटिव ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम में कन्वर्ट नहीं हो सकती, या जो गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट के अंदर इनस्टेबिलिटी रखती हैं या इनस्टेबल हो जाती हैं गैस्ट्रिक पीएच की वजह से, उन्हें गैस्ट्रोरेटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. और वो ड्रग्स जिनका इंटेंडेड एक्शन या रिलीज़ कोलोनिक रीजन के अंदर है, उन्हें हम गैस्ट्रोरेटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कन्वर्ट नहीं कर सकते. So there was all from the introduction to gastroretentive drug delivery system. In the next lecture we will be discussing the floating drug delivery system. Till then, take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.